So, very good evening, friends. This is your own friend Bharat with a daily market summary for January 18, that is today. So, हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ और बेस्ड ऑन दैट उसके बेसिस पे हमें अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए क्या में मॉडिफिकेशंस दिखता है एज पर द मार्केट इन टुडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द निफ्टी फर्स्ट. सो अगर हम आज निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी ने जो कल का हाई है वो कोशिश किया शुरू में, बट इट वाज वेरी मच बियरिश फ्रॉम द डे स्टार्ट इटसेल्फ. सो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखेंगे, सो इट हैज स्टार्टेड एज मोस्टली ओपन इज इक्वल टू हाई विच वाज द केस इन फॉर बैंक निफ्टी यस्टरडे. सो कल जो था वो रिलेटिवली बैंक निफ्टी बहुत ही वीक था स्टार्टिंग ऑफ द डे से. और आज अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ने जो है ये आज का स्टार्ट से ही शुरू से ही वीक था. तो अगर हम देखते हैं ये पहली कैंडल ही जो शुरू में थोड़ा बहुत लगा कि हैमर बनी है और यहाँ से शेयर सपोर्ट मिलेगी, बट थ्रू आउट द डे वी वर नॉट एबल टू even touch it single time the high of the day. और वहां से इतनी बड़ी कैंडल के बाद देयर वाज अ स्लाइट काइंड ऑफ अ पुल बैक अराउंड टिल 18,300 जो हम लोग कल भी डिस्कस किए थे और वीक अहेड एनालिसिस संडे में जो अपकमिंग वीक के लिए किए थे वहां पे भी कि 18,300 टू 400 एज पर द डेटा सजेस्ट कि इट शुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और वही हुआ. और 18,300 के आसपास 320 के आसपास से देन वी सॉ इट अ ह्यूज मेल्टडाउन. सो डेली पे अगर बड़े टाइम फ्रेम पे फिर से जाकर देखते हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, राइट. तो इसने जो पिछले 4 दिन की जो कैंडल्स हैं उन सबको एनगल्फ कर लिया है. तो 4 दिन में जो मार्केट में हुआ उसका एक ही दिन में जो है बियर्स ने कंट्रोल लिया एज पर द चार्ट जो दिख रहा है हमें. और एक चीज और जो हमने कल डिस्कस की थी कि देर इज अ गैप, राइट. ये गैप जो था ये 18,080 और 18,125, ये जो गैप जोन था ये वाला, ये आज फिल हुआ है. जो कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस गैप बीइंग फिल्ड. तो वो आज फिल हुआ है. और इट हैज नियरली टेकन अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ अ सपोर्ट. अगर हम 15 मिनट्स चार्ट पर जाकर देखते हैं तो टुवर्ड्स दैट जोन ओनली 18,080 पे जो था हमारा गैप का लो, गैप जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं के करीब थोड़ा बहुत इसने कोशिश किया लास्ट के 10-15 मिनट में रिवर्स करने का. सो अभी जो है इस बेसिस पे कल के लिए क्या, या इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के लिए क्या लग रहा है, लेट्स सी. सो कल के लिए हमें ये लग रहा है कि इन केस अगर हम बेसिकली प्राइस एक्शन को देखेंगे एंड देन वी विल कंफर्म विद द ओआई डेटा. सो प्राइस एक्शन के हिसाब से द थिंग इज लुकिंग लाइक if at all we see any kind of a pullback towards 18,200 to 18,250. So till the time वहां पे अगर हमें प्राइस एक्शन ये सजेस्ट नहीं करता कि इट इज कंटिन्यूइंग एंड इट इज सस्टेनिंग अबव 18,250 फॉर say 30 minutes duration, there is a high likelihood or a possibility of that that bounce being getting sold. So that 18,200 or 250 which was acting as a support yesterday, by the today as per the price action looks like to be it can act as a resistance now. So ये जो 18 to 21 जो हमारे लिए कल सपोर्ट का काम कर रहा था वो आज हमारे लिए अगर कुछ बाउंस होता है और वो सस्टेन नहीं करता फॉर 30-45 मिनट्स, सो देर इज अ हाई लाइकलीहुड कि हम वहां से फिर से सप्लाई देखेंगे, फिर से सब सेलिंग प्रेशर देखेंगे. दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. सो कैसे कल मार्केट रिएक्ट करता है, प्राइस एक्शन रिएक्ट करता है अराउंड दीज लेवल्स इज टू बी सीन. सो नाउ वी कम टू द ओआई डेटा एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस. सो उसके बेसिस पे कल जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज 18,200 पे जो पुट राइटर्स और थे वो बहुत स्ट्रांग थे. सो आज जो देखा गया देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ अनवाइंडिंग ऑन दीज स्ट्राइक्स फॉर द पुट साइड, और calls has been added. So basically call addition is indicating that now 18,250 18,200 का जो support zone था कल by put writers, that has been taken off by the call writers, and call additions have been done on those strikes as well as lot of put unwinding has been witnessed. But at the same time 18,000 is crucial right now to be witnessed in the tomorrow or the upcoming sessions. क्योंकि 18,000 का जो पुट है वहां पे इवन दो द क्वांटम हैज बीन सीन रिड्यूसिंग, देयर हैज बीन सम सॉर्ट ऑफ पुट अनवाइंडिंग एट 18,000 strike also, but at the same time the pcr is a very in favor to the put writers.
at this strike. So we need to see how price action behaves around 18,000. If at all 18,000 is held upon, it means that the put writer has still, managed to, sustain the control, and he has not given it so easily. So 18,000 से bounce आता है, but that bounce has to be clearly for long positions it had to be witnessed कि 18,250, 18,300 को अगर जब तक हम close नहीं करते तो we can even consolidate within this narrow range. And second possibility है जो वो ये है कि अगर हम कल आज का लो अगर हम ब्रीच करते हैं कल और कमिंग डेज में, दैट इज 18,080 के अप्रोक्सीमेटली, तो देन इट इज इमीडिएटली लुकिंग लाइक कि ये जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगी वेरी माइनर सपोर्ट है, दैट इज अराउंड 18,000 ओनली. So again, that is where we need to see how the price behaves, and even the OI data is suggesting right now it should act as a support. But कल क्या होगा dynamic market में, that we need to see. If put writers start unwinding their positions at 18,000, we definitely are headed towards some lower levels. और वो हमने कल डिस्कस भी किया था कि काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड आउट लग रहा है इन केस, बट अगर कुछ भी रिवर्सल थोड़ा बहुत होता है या पुल बैक आता है तो वी माइट टेस्ट द प्रीवियस लेवल्स, प्रीवियस हाइज लेवल्स. सो लास्ट वीक का जो हाई था वो दैट इज अराउंड समथिंग 17,924, 925. तो अगर 18,000 ब्रीच होता है तो द नेक्स्ट लेवल which has to be watched very vigilantly is 17,920. तो यहाँ पे सपोर्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है. Based on that, we will see how the market reacts to these price points. So these are the key levels which we need to witness closely in tomorrow or the upcoming sessions. So अभी के लिए जो है निफ्टी में फॉर द टाइमिंग एक लॉन्ग व्यू के लिए अवॉइड करना चाहिए टिल द टाइम वी क्लोज convincingly above 18,250, 300. So that is the view for Nifty. So बैंक निफ्टी पे अगर हम चलते हैं आज, तो बैंक निफ्टी ने जो है रिलेटिवली आज स्ट्रेंथ शो किया. Yesterday bank nifty was weak, nifty was strong. Today nifty was weak from the day start itself, and bank nifty has shown strength in the morning session. But even if you see for the daily candle, so it has been an inverted hammer, right? So it means कि selling pressure जो था वो higher level से clearly evident है. At the same time, if we see, so the bank nifty has been taking support around this 38,000, 38,100 level for the past 3 days, and it is holding it up also, at least till today's close. So right now, to see the key levels for the coming days, we need to switch on to the shorter time frame. So अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आज की जो पहली कैंडल थी वहीं से एक स्ट्रेंथ था बैंक निफ्टी में. ये एक हैमर कैंडल थी, और यहाँ के बाद में हमने थ्रू आउट द सेशन till this candle, that is a 315 candle, we only broke this day low. Otherwise we saw a lot of strength throughout the day in the bank nifty, and from there around 215 there is a gradual fall which happened on a very speedily basis. और ये जो चार कैंडल्स हैं इन्हीं में basically we breached the day low as well. So which indicates at the end of the or at the close of the session, we saw some immense pressure of selling. And वहाँ पे जो है, even still we managed to save the close above 38,100 levels. So now इसके बेसिस पे हमें अब क्या व्यू लगता है एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए कल या इस वीक के लिए, दैट इज फर्स्ट बेसिकली हम इसमें भी हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे देखते हैं कि क्या लगता है. सो प्राइस एक्शन का अगर हम देखते हैं तो ये लेवल जो है यहाँ पे इसने काफी टाइम सपोर्ट लिया है, एंड हियर इट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, हियर इट एक्टेड एज अ सपोर्ट फर्स्ट टाइम. सो इफ यू सी here it acted as a first time support, here it has acted second time support, here this entire zone has acted support for the third time. And today, at least at the close, the 15-minute candles showing that some sort of support has been taken at this point again, but that will be validated in the tomorrow's session.
So right now what looks as per the price action is, अगर हम कल ये वाला लो जो आज का हमने बनाया इसको ब्रीच करते 38,100 के आसपास वाला, then we definitely can see 37,860 850 levels in the immediate short term. Secondly, अगर वो भी breach होता है तो then there is a likelihood of visiting the previous week high of 37,450. This is purely based on the price action part. So now coming to the OI data and option chain analysis. So बैंक निफ्टी में अभी भी जो है वो हमें आज उल्टा देखने को मिला है एज कम्पेयर टू निफ्टी. तो यहाँ पे जो है देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कॉल वाइंडिंग अराउंड 38,000 लेवल्स एज वेल एज 38,100 लेवल्स. So which indicates कि 38,000 और 38,100 के आसपास में call writers are unwinding their position, which in itself indicates they are not sure that they will be able to hold these levels, or this should act as a resistance in the short term. At the same time, the put writers are dominating in these, strike prices from 38,000 to 38,200, 250. At the same time, there has been lot of, puts being added on the higher strikes, uh, in above of 18,300. So 18,300 से 18,500 तक put addition भी आज देखा गया, even though some sort of call winding is visible on these sides. So यहाँ पे जो है ये clarity नहीं है कि मतलब कौन सी डायरेक्शन में वी आर हेडिंग टूवर्ड्स. सो 38,500 के आसपास में पुट्स हैव बीन एडेड बट कॉल अनवाइंडिंग हैज बीन विटनेस. सो कल या आने वाले कुछ दिनों में सेशंस में हम लोगों को ये क्लियर होगा कि हाउ इट इज द प्राइस बिहेव्स अराउंड दिस. But at least for the timing, based on the data as well as the price action, Bank Nifty is currently looking at relatively, strong. बट कल के लिए अगर यही बाउंस 38,500 तक अगर हमें ये बाउंस मिलता है और वो सस्टेन होता है, so then there is a possibility, for 38,700 800 in the coming days, which looks a bit relatively, difficult based on today's price action. और सेकेंडली अगर 38,500 के आसपास में हम लोग बाउंस लेते हैं वहां तक और उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाते, then there is a likelihood to retest the today's low as well as, you know the other lower levels of 37,850 approximately in the immediate short term. So this is the view for Bank Nifty. So broader markets में आज के लिए जो अगर हम एक दो स्टॉक्स जो डिस्कस करते हैं जिन्होंने relative strength show किया है, तो the first one is tin plate, which will be on my radar. और अगर हम tin plate में देख रहे हैं तो basically it has given a rounding bottom पैटर्न का भी आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है. तो यहाँ पे इसने इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी it has breached on a higher end. So एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट्स थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, जैसे आज काफी वोलेटाइल था मार्केट, तो देयर माइट बी सीन सम सॉर्ट ऑफ अ पुल बैक. सो दैट पुल बैक कैन बी यूटिलाइज्ड टू, add certain accumulate certain small positions after your consultation with your financial advisor, because this is what we are doing it as a purely educational purpose exercise. So there is no recommendation or anything for this thing. Volumes are also supportive, so looks like, demonstrating relative strength. So the second word is Jindal Word. Second stock is Jindal Word for the day, which has shown immense relative strength. So it is in a continuous uptrend and very strong, momentum as well, backed up by the decent volumes. So अगर markets turbulent रहता है और अगर हमें कोई pullback मिलता, तो if at all it comes to these levels, around about 270 to 280, that will be a decent, point to think about to accumulate. So this is all what I have for today as a part of the market summary for Jan 18th. Hope you enjoyed it. If at all you are like, in having any, uh, benefit from our content, or you are liking the way content is helping you out in some way or other way, please do not forget to like, share, and subscribe. And you can subscribe to our Twitter as well as Telegram channel as well. This is our handle on the Twitter. So thanks a lot. Thank you for watching. Take care. Stay safe. Stay inside.